Hey everyone, welcome back to Arijit Talk Sports. This is Arijit, and today we are reacting to Vettel's departure from Ferrari. So, as you might have heard, four-time world champion Sebastian Vettel has just decided to part ways with Ferrari after the 2020 season. At present, we are being told through news sources that it was a mutual decision. Now, am I surprised? Well, yes, because even though there was a lot of criticism against Sebastian Vettel, I really just thought कि वो मतलब कि कुछ और सीजन रहेगा फरारी के साथ. I didn't think Ferrari would be so quick to ask him to go, और या सेबेस्टियन वेटल इतना जल्दी छोड़ना चाहेगा. मुझे लगा था कि डेफिनेटली दिस लेक्लर्क वेटल पार्टनरशिप अभी कुछ और साल हमें देखने मिलेगी, स्पेशली जब लास्ट सीजन के बाद हो रहा था कि वो 2019 सीजन है उसका बहुत डिसअपॉइंटिंग हुआ. पीपल वर सेइंग दैट ही माइट रिटायर आफ्टर द 2019 सीजन, बट व्हेन ही डिड नॉट एंड ही डिसाइडेड टू कम बैक फॉर द 2020 सीजन, आई रियली थॉट दैट ही वुड कंटिन्यू विद फरारी. बट आई थिंक पर्सनली दैट दिस इज अ फरारी डिसीजन. आई थिंक फरारी रियली wanted to replace him with somebody else because I think they have seen Vettel make too many mistakes, and I think they are very convinced that he's past his prime, and that's why they have just forced his hand and they've asked him to move out of Ferrari. So what do I think of Sebastian Vettel's time at Ferrari? Well, when a four-time world champion like Vettel joins a championship-winning team like Ferrari and they make one of the best cars on the grid, you expect them to win world championships. But ऐसा नहीं हुआ. Now, to Vettel's credit and to Ferrari's credit, there were multiple points in the last few seasons जहाँ पे लगा कि Vettel can actually go ahead and win the world championship, and at points he was leading the world championship. Now, but every time he lost to Lewis Hamilton. Now it was champion against champion, and every time Sebastian Vettel just lost. Now, I think कि बहुत ज़्यादा ब्लेम इसका फरारी की स्ट्रैटेजी पे भी जाता है, जस्ट पुअर स्ट्रैटेजी डिसीजंस, जो कि मर्सिडीज ने बेटर स्ट्रैटेजी चूज की जिसकी वजह से हैमिल्टन जीत गया. बट वेटल आल्सो मेड सम सीरियस रूकी मिस्टेक्स. बहुत बार उसने पॉइंट्स थ्रो अवे किए, बहुत बार रेस लीड्स थ्रो अवे किए, जिसकी वजह से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन पाया. नाउ दैट डजंट मीन दैट ही हैजंट हैड गुड परफॉर्मेंसेस एट फरारी. आई स्टिल थिंक ही हैज हैड ग्रेट परफॉर्मेंसेस एट फरारी, बट डेफिनेटली यू कैन नॉट कंपेयर हिज टाइम एट फरारी विद हिज टाइम एट रेड बुल. रेड बुल में जिस तरीके से वो जीता था, यू कुडंट सी दैट सेबेस्टियन वेटल इन अ फरारी कार. So honestly, I would not look back at his time very favorably. I think if he could turn it around and if he could beat Charles Leclerc this season, तो थोड़ा सा better हो जाएगा outlook of people, and मेरा outlook is उसके time पे at Ferrari. But really, I just think it was very disappointing to see a four-time world champion in such a good car, not being able to win the world championship and just throwing away points. Not talking about कि मुझे क्या लगता है सेबेस्टियन वेटल को अब अपने करियर में क्या करना चाहिए. तो आई अंडरस्टैंड कि वो रेड बुल नहीं जा सकता, एंड आई अंडरस्टैंड वो मर्सिडीज नहीं जा सकता, तो डेफिनेटली उसे कोई मिड टीयर टीम जाना होगा. और मुझे लगता है मैक्लेरन से अच्छी मिड टीयर टीम अभी नहीं है जहां सेबेस्टियन वेटल को जाना चाहिए. जितना रिसर्जेंस वो दिखा रही है, डेफिनेटली ऑन देयर वे अप, स्पेशली लास्ट सीजन जो उसने परफॉर्मेंस शो की. They're improving very rapidly, and if you add a Sebastian Vettel to that, then I think वो अपने twilight end of his career में भी बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा, and McLaren को भी बहुत फायदा होगा. So I would love to see him at McLaren, honestly. So finally, who do I think should replace Sebastian Vettel at Ferrari? Well, my first choice has to be Lewis Hamilton. I mean, the six-time world champion. He's always said that he wants to finish his career at Ferrari. ठीक है, लास्ट मंथ उसने मना किया है. He has said that he is committed to Mercedes, but I just think that this prospect is too exciting to just look over. If Lewis Hamilton actually moves to Ferrari after the 2020 season, तो कमाल का. And if he ends up winning a world championship with Ferrari, I think that'll just establish him as the greatest of all time. फिर कोई डिबेट नहीं बचेगा. और just imagine Lewis Hamilton and Charles Leclerc. That'll just be one of the most formidable driving lineups for any team all time, I think. तो ये definitely सबसे ज़्यादा exciting move है, but मुझे लगता है हालांकि ये unlikely है considering the commitment that Lewis Hamilton has just showed to Mercedes. But it's just fun talking about it. My second choice for the job is Daniel Ricciardo. Now, when Daniel Ricciardo decided to move from Red Bull to Renault, I just didn't understand it. मुझे लगा कि बहुत बुरा मूव होगा, और ये व्यू पॉइंट जस्टिफाई हो गया लास्ट सीजन जब हमने देखा कि रेनो ने अंडर परफॉर्म किया और रेड बुल ने मच बेटर परफॉर्म किया. नाउ आई अंडरस्टैंड कि वर्स्टैपेन से वो ऑब्वियसली नंबर 2 नहीं रहना चाहता था. ही डिड नॉट वांट टू कम्पीट विद वर्स्टैपेन. आई गेट ऑल दैट, बट when you talk about his ultimate dream of actually winning a drivers championship, that is definitely not going to happen at Renault. So I think the move to Ferrari just makes sense for him, and I think वह बहुत exciting होगा seeing Daniel Ricciardo for the first time in a championship winning car, I think, और seeing him compete with Charles Leclerc to become the number 1 driver of Ferrari is just a very exciting prospect. And I think इस सारे जो मैं names लूँगा इसमें सबसे ज़्यादा likely है Danny Ricciardo to actually fill that spot that Sebastian Vettel has left open at Ferrari. Choice number 3 for me is Carlos Sainz from McLaren. Now, मुझे पता है McLaren बहुत अच्छा चीज़ें कर रही है and it's on its way up, but I think Carlos Sainz should move to Ferrari because definitely Ferrari और McLaren को आप अभी compare नहीं कर सकते. Ferrari is just leagues better than McLaren right now, despite the improvements that McLaren is making. So
बट मुझे पता है कि उसे ऑब्वियसली डेफिनेटली नंबर 2 स्पॉट मिलेगा. चार्ल्स लेक्लर्क वुड बी नंबर 1, वुड बी द प्रेफर्ड ड्राइवर एट फरारी. सो आई डोंट नो इफ ही एक्चुअली वांट्स टू मेक दिस मूव, बट मुझे लगता है उसे डेफिनेटली करना चाहिए. और मुझे लगता है कंसिडरिंग व्हाट ही डिड विद मैक्लेरन लास्ट सीजन, जितना उसने इंप्रेस किया, आई थिंक ही कैन डू सम वेरी वेरी गुड थिंग्स विद फरारी. डेफिनेटली आई लाइक टू सी कार्लोस साइंस मेक दिस मूव, just like a lot of other people, I believe. और मुझे लगता है कि he is actually the second most likely to make this move after Danny Rick. Okay, now so my least favorite choice, and this is another name that is being brought up, is Valtteri Bottas. Now, just the thought of Valtteri Bottas to Ferrari is not the most exciting. I think जितना bland उसके performances रहे at Mercedes, and not that he has not been good, I think he's been a team man, and that is why I think Ferrari would be really interested in signing him, but I think it's just been bland. He won't really give any competition to Charles Leclerc, and मुझे लगता है इतने young age में Charles Leclerc को definitely तगड़ा competition का ज़रूरत है to actually develop and to give Max Verstappen real competition and to actually become world champion one day. तो मुझे लगता है Valtteri Bottas is definitely not the man for the job, but 2020 season में उसका contract end हो रहा है, so he's definitely an option. So that was my reaction to Ferrari and Vettel parting ways. It was definitely breaking news, sent shockwaves around the F1 world, and मुझे लगता है जो चीज़ मुझे important लगे वो इस वीडियो में मैंने बात कर लिया उसके बारे में. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है. Who do you think is the best man to replace Vettel at Ferrari? Where do you think Vettel should go? And just let me know your general reaction to this move. और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को पढ़ के. और अगर आपको मजा आया हो इस वीडियो में तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एज ऑलवेज.